Hello everyone. In this video we are going to study about axioms of probability. There are axioms of probability. First is axiom of non-negativity. Axiom of non-negativity states that if you have any event A, then the probability of that event is always greater than 0 or equal to 0. So this is the first property of probability, that is axiom of non-negativity. Second property है normalization, or it is also known as axiom of certainty. It states that total probability of certain number of events is always equal to 1. सभी इवेंट्स की टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 1 की इक्वल आती है. दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन. थर्ड प्रॉपर्टी है एक्सियम ऑफ एडिटिविटी, और ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए. मतलब ऐसे इवेंट्स जिनकी इंटरसेक्शन जो है वो 5 हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू 0. और एक्सियम ऑफ एडिटिविटी हमें बताती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ इवेंट्स, लेट n events, is always equal to summation of individual probabilities of all the events, and this is valid for only mutually exclusive events. So this is all about the axioms of probability. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में. कौन कौन से काउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं. फर्स्ट है एडिशन प्रिंसिपल, या फिर इसको हम बोलते हैं सम रूल. सो इट स्टेट्स दैट इफ अ टास्क कैन बी डन इन m ways or n ways but not both at the same time, then the total number of ways is m plus n. Both the ways or both the tasks are not happening at the same time. एक समय पर अगर दोनों ही वेज आपके दोनों ही टास्क नहीं हो रहे हैं, अलग अलग आप दोनों टास्क को कर रहे हैं, देन टोटल नंबर ऑफ वेज आप किस तरह से निकालेंगे? m प्लस n एडिशन करके. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट रूल. सो इफ यू आर डूइंग एनी टास्क in m ways and another task in n ways, then total number of ways is given by m into n, m multiplied by n. So if you have or condition in your problems, या तो आपको m ways या फिर n ways किसी टास्क के लिए करने हैं. अगर शब्द या आपके स्टेटमेंट में आ रहा है, then you are going to use addition principle. And if you have this terminology or this word in your problem, and मतलब आपको m ways भी करने हैं and दूसरे टास्क के n ways को भी परफॉर्म करना है, दोनों आपको परफॉर्म करने हैं, दोनों टास्क करने हैं, then you are going to use multiplication for finding total number of ways. So these are the two counting principles, that is addition principle and multiplication principle. Third counting principle is permutation. So what is a permutation? Permutation is basically the arrangement of the objects in some definite order. अरेंजमेंट को परम्यूटेशन कहा जाता है, एंड इट इज यूज्ड व्हेन ऑर्डर मैटर्स. इफ ऑर्डर मैटर्स देन यू हैव टू यूज द परम्यूटेशन. सो बेसिकली दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन सम डेफिनेट ऑर्डर. इसके लिए फॉर्मूला है, इट इज डिनोटेड बाय NPR एंड इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. इस फॉर्मूले की हेल्प से आप परम्यूटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और अगर रिपीटेशन हो रही है,
अगर आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं then you can also use this. Also if you have n objects, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से n1 ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रही हैं और उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो n1 टाइम्स रिपीट हो रही हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो n2 टाइम्स रिपीट हो रही हैं, तो परम्यूटेशन आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. दिस इज द अनदर मेथड फॉर finding number of ways or permutations when the repetition of objects is occurring. Repetition अगर हो रही है objects की, then you can use this formula as well. Now, next counting principle is combination. In combinations, order does not matter. अगर order का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, order doesn't matter here for combinations, and combination can also be said as selection of any event from total population. When you are doing some selection, जब आप कोई selection कर रहे हैं तब भी हम उसको combinations से रिलेट कर सकते हैं. उसके लिए फॉर्मूला है NCR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. And next counting principle is factorial principle. n factorial को आप इस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं n into n minus 1 and so on up to 1. And it is used to count arrangements. It is used to count arrangements of n distinct objects. So there are 5 counting principles, that is sum rule, product rule, permutations, combinations, and factorial principle. Now in the next video I will be telling you about addition law of probability, multiplication law of probability, and what is conditional probability. So thank you guys for watching this, and let's meet in the next video. Bye bye.